Awalnya ada 4 pemuda yang sedang hiking-hiking, yang kalau menurut gue sih gak jelas. Ya kan kalau hiking itu minimal ke Gunung Cikuray atau Gunung Ciremai gitu. Ini mah malah ya ke bukit. Aduh. Keempat pemuda ini kita sebut saja si Ucup, Mamat, Udin, dan Engkos. Mereka berempat itu nikmatin banget tuh pendakian. Ya lo bayangin aja, kayak orang yang lagi GALAW alias galau, terus jalan-jalan. Pasti happy Salma lah, hahai. Tapi keseruan mereka berubah menjadi kengerian. Gimana nggak ngeri coba? Mereka tak sengaja nemuin mayat cewek di tempat mereka bersenang-senang. Aduh, mending kalau nemuin cewek cantik yang masih hidup. Bisa kali digilir, hehe. Lah ini cewek yang udah koid, auto muntah dong. Mereka pun panik dan langsung nelpon ke polisi. Dia nelponnya pakai bahasa Sunda kayak gini. Mang, ya ayam mayat awewe, bla 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 bla. Pak polisi datang dan langsung membawa mayat cewek tersebut ke rumah keluarga si cewek buat langsung dikremasi. Dan semua keluarga sangat terpukul. Oh iya gengs, cewek yang mati itu namanya Puja. Bapaknya si Puja ini gengs ternyata adalah seorang pengacara. Ya bukan pengacara sih, lebih tepatnya hakim. Ya semacam itulah. आज संडे है ना, तो आई थिंक रात के कुछ 10 या कुछ बजे थे. हम जॉब करके क्या करेंगे? अच्छा बोर मत कर. जी नमस्ते। अरे अच्छा विनोद, आई कॉल यू बैक. वाओ, आजा बैठ बैठ खाना खा. थैंक यू दादू। ओहो। क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? जस्ट वांटेड टू टॉक टू हर, टेक सम एडवाइस। सुबह पूना जाकर उसे सरप्राइज दे देती हूँ। व्हाट से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. हो गई। रात को बैग की जिप जैम हो गई। 1 घंटे और तुम अभी? पूना। अच्छा जाओगी कैसे? टेंशन मत लो एमएलए जी। चलो वाले को बुलाना प्लीज, ये ठीक से. Dia langsung paham betul bahwa anak ceweknya itu mati dibunuh. Makanya dia langsung meminta bantuan sama polisi yang bernama Avinash Verma. Atau bisa disebut Verma saja. Atau bisa disebut Verma. Meskipun si Verma ini polisi spesialis narkotika. Malah disuruh mecahin masalah pembunuhan. Liar dah orang mah. Itu बहुत सारा है. कवर फायर दे. लेकिन कमिश्नर का Si polisi Verma pun akhirnya menerima dan dibantu oleh beberapa polisi. 2 polisi cowok, Raju Gupta dan Amit Chauhan. Dan 1 polisi cewek yang cuantiknya kebangetan sih kalau menurut gue mah. Manis-manis gimana gitu. Doi adalah Sanjana. Raj Gupta. Amit Chauhan sir. Amit. Sanjana Bhatia. Dan di hari pertama pun mereka berempat memulai penyelidikan. Mulai dari data diri si cewek, penyebab kematian yang disebabkan oleh pukulan berat di tulang parietal dan bukan karena tembakan. Mereka berempat pun memutuskan untuk menginterogasi keluarga si cewek. Dan yang pertama kali ditanya adalah babehnya si cewek. So ACP Verma. Si babeh menjelaskan kalau si Puja itu keluar rumah pada jam 7 malam Sabtu ke rumah Kapita sahabatnya. Emaknya pun menambahkan kalau dia nelponin anaknya tapi nggak diangkat. मैम. बहुत अजीब महसूस कर रही थी। एक जगह होंगे जहाँ नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा। फिर? उसका फोन बजता रहा, एक घर फोन किया।
और वहां से पता चला वो बेचारी तो आईसीयू में होगी। फिर मैंने तो यूं ही पूछ लिया और उन्होंने कहा कि जिस लड़की खाई डेड। सर इस घर में कनाडा से आया है। पिछले 5 महीने से उसकी फियांसी किया के साथ। we would like to talk to them as well. शोले ऋषभ, Interogasi kedua, polisi ini akan bertanya kepada Rishab dan cewek tunangannya yang bernama Kia, anak temannya si Babeh. Rishab ini, gengs, adalah anak temannya si Babeh. Kata si Rishab, dia main di rumah temennya dari malam Sabtu, tapi si Kia mah ya nggak kemana-mana. Si Kia ada aja di rumah. Interogasi ketiga, Dadu, pembantu di rumah. Kata si Abah Dadu, si Puja bangun pagi dan meminta bantuan sama si Abah buat benerin resleting yang lepas. Hadeh kirain resleting celana, tapi resleting tas. Haha, pasti menang banyak nih si Abah. Si Abah keluar rumah buat benerin tasnya si Puja. Tapi pas masuk ke rumah, tiba-tiba si Abah ngeliat Kavita, temannya si Puja ini, lari ketakutan di tangga dan terjatuh yang mengakibatkan atau menyebabkan si Kavita ini koma. Setelah Kavita jatuh, si Abah ngeliat Raffi, suaminya si Kavita, keluar dari kamar dan lari nyamperin istrinya yang jatuh. Lalu, Puja di mana? Kata si Raffi, Puja pasti udah pergi. Tapi kata si Abah, gak mungkin lah cu, orang tasnya juga masih ada di rumah ini. Oke, sampai di sini saya jelasin dulu ya. Biar kalian gak bingung dan marah-marah gak jelas. Si Puja korban pembunuhan. Dia tinggal bersama si Babeh dan si Emak. Di rumah itu juga ada Rishab dan si Kia, pasangan kekasih yang baru saja tunangan. Nah geng, si Puja ini niatnya mau ke rumahnya Kavita, sahabatnya. Si Kavita ini punya suami namanya Raffi. Dan punya pembantu si Abah, Dadu. Gimana? Udah ngerti belum? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu habis. Lanjut. Polisi mendapatkan sedikit harapan karena pada jam 10 pagi ada seseorang yang nelpon ke rumahnya si Raffi dan mungkin diangkat sama si Puja. Di hari kedua interogasi, si polisi datang ke rumah sakit di mana Kavita dirawat karena koma. Padahal si niatnya mau nginterogasi si Raffi. Jelaslah si Raffi marah. Istrinya lagi koma malah ditanya-tanya. Di rumah sakit pula. Ditambah si Raffi ini kan pemimpin salah satu partai. Dia rasa gak dihargai sama si polisi ini. Dan interogasi pun dilakukan di ruangan yang lain. Nah gengs, menurut si Raffi, dia keluar rumah jam 9.45. Lalu dia balik lagi ke rumah buat ngambil pen drive yang ketinggalan. Dia masuk ke kamar di lantai atas. Dan saat dia di dalam kamar, dia ngedenger si Kavita ngajorowok atau menjerit. Lalu si Kavita jatuh dari tangga, disorodot meren gengs. मिस्टर खन्ना, यही 10 पौने 10। फिर आप एक पेन ड्राइव लेने। घर का दरवाजा आपने खोला था? इतने में कविता की चीख सुनाई दी। बाहर जाके देख। पूजा गिरी होगी। फिर आपने ये कैसे अज्यूम? नहीं, अगर नहीं हुई तो आप समझ नहीं पाए सकता हूँ। Even from the back I knew it was her. मिस्टर खन्ना, दादू। बहुत साल से है मेरे। So listen, is there anything else? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सैटरडे मॉर्निंग जब आप पूजा से मिले थे, फ्राइडे रात को something on her mind. तो आप Suatu hari, si Rishab datang ke kantor polis karena dia disuruh sama si Abah atau sama si Babeh buat nganterin data daftar temannya si Puja. Lalu si cantik meminta si Rishab untuk tanda tangan. Oke, sampai di sini. Apakah kalian sudah bisa menebak siapa pembunuh Puja? Gua kasih waktu kalian 10 detik buat nulis di komen.
Siapa pembunuh Pooja? Oke, waktu habis. Apakah jawaban kalian benar? Lanjut ceritanya, gengs. Di hari berikutnya, si Verma masuk ke kamarnya si Rapi buat penyelidikan. Dan dia sempat lihat beberapa gelang dan perhiasan lainnya. Yang mungkin itu milik si Kapita, istrinya si Raffi. Setelah beberapa hari perawatan, si Kapita pun ada kemajuan nih, gengs. Dia bisa menggerakkan jari telunjuknya. Kalau menurut gue sih ini akan jadi saksi kunci sebenarnya. Dan setelah si dokter ngomong sama si Rapi kalau istrinya membaik, si Rapi kelihatan cemas. Otomatis dong gue nyangka kalau dia ini ada something gimana gitu. Dari awal sih gue juga udah duga kalau dia pembunuhnya. Bangsat emang nih orang. Tapi kata bapak gue yang kebetulan ustad, nah kita jangan suudon, kita jangan berburuk sangka. Oke lah. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Si Verma dan si Cantik sekarang menginterogasi emak-emak yang memang pernah bekerja sebagai ART atau asisten rumah tangga di rumahnya si Raffi. Si emak bilang begini. उस दिन मैं 3 बजे तक पहुंची थी और देखा घर से बाहर एक आदमी निकल रहा था, एक बड़ा सा थैला था। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकल, दादू भी घर पे नहीं थे। मैंने रवि सर को कॉल लगाया और बोला ऐसा ऐसा हुआ। रवि सर ने क्या? टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उन्होंने आपने उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा तो था, पर 1 सेकंड के लिए मेरे साथ आइए। थैंक यू। Dan akhirnya si Verma pun melakukan penyelidikan ke si Kavita yang lagi koma, tapi bisa gerakin jari. Di sini nih gue deg-degan, sumpah. कविता जी, उस दोस्त का पूजा का कत्ल कैसे किया गया? बेचारी चीखी चिल्लाई तो Going! Hey, get out of here! Get out! Stop it! Stop it! छोड़ो मुझे! Stop it! Please! अगर ऐसी बात है तो तहकीकात करने दो एसीपी वर्मा। आप उसे तहकीकात का नाम दे रहे हो? तो फिर आपकी आंखों में इतना खौफ क्यों है? लाजमी है। लेकिन आप कोमा में पड़े अपनी कविता ने कुछ देखा है। अगर तुम सच बोल रहे हो, कविता जी, मैं आपसे क्या आप हमें उसका जवाब देंगे? इशारा कीजिए। आपने अपने पति रवि खन्ना को करते हुए देखा? अगर हाँ, आपकी दोस्त पूजा चौधरी का कत्ल पति रवि ने पूजा का खून ऊपर कीजिए। देखा? हस्बैंड रवि खन्ना के घर आने से पहले Stop it! Stop it! मुझे आवाज दे रही है। Sir, Ravi, I warn you. Stop it! I warn you. Ravi, stop it! Get out! Why, please, please get out, get out. Anjir, gue benar-benar kesel, gengs. Keselnya itu kayak emak-emak yang lagi nonton sinetron gitu. Kebayang gak sih? Emang membagongkan banget nih film. Kecurigaan semakin menjadi karena ada seseorang yang nelpon si Pooja dan setelah diperiksa, panggilan berasal dari wartel yang ada di dekat apartemennya si Rapi. Dan para polisi pun mengumpulkan orang-orang di rumahnya si Babeh buat nginterogasi lagi dan lagi. Aduh, emang benar-benar penasaran sih si Verma mah. Haven't you wasted enough of everyone's time? Sir, मोहन। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। अच्छा ये बताइए मोहन, यहाँ पे कौन है
जो शनिवार Security apartemen pun dihadirkan dan यही वाले साहब आए थे साहब। बुलशिट, मैं वहाँ बिल्डिंग पे आया था शनिवार की सुबह। गया ही नहीं था। और आपने तो रजिस्टर साइन किया है। बुलशिट, आर यू मैड? यहाँ पे सुखबीर लिखा है। मेरा नाम सुखबीर थोड़ी ना है। फ्राइडे की रात जिस सुखबीर ने साइन किया था उस सुखबीर नाम तो कॉपी कर लिया, लेकिन हैंडराइटिंग मैच नहीं। ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है ना? You signed एज दिस हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग इज गए थे ऋषभ? या कि ये आदमी जो है वो बिल्डिंग बोले कि भाई एंट्री करो, हमको इनका आगे तो हम देखे कि लिखे कहाँ है, तो जब हम नाम देखे बुकवा में क्यों गए थे? और तो पूजा से मिलने इसलिए गया था, पूजा के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? नो नो नो, ईमेल पढ़ लिए। बट सर शट अप। oh my god, titled ternyata si Rishabh ini selingkuh sama si Puja. Aduh. Tapi apakah si Rishabh ini pembunuhnya? Oke, lanjut. Si Rishabh ini datang ke apartemennya si Rapi buat ketemu sama si Puja karena dia pikir di sana lagi nggak ada siapa-siapa pula. Wow, wah kayaknya mau week nih. Tapi pas tiba di kamar si Puja udah mati. She is dead. Dan pas si Rapi datang ke rumah, panik dong. Jadi si Rapi nyuruh seseorang buat ngebuang mayatnya si Puja karena dia panik dan takut. Soalnya pemilu udah dekat. Dia kan seorang ya petinggi partai lah. ये पूजा है ना? पूजा कौन? आपके घर में मर्डर सर? सर इलेक्शन टाइमिंग है सर। बुलाना किसी को जल्दी, just Nah gengs, saat genting begitu tiba-tiba datang istrinya si Rapi yaitu si Kapita. Nah si Kapita ini panik dong lihat mayatnya si Puja. Dia lari dan disorodot. कमरे में पड़ी है, पहले इस लाश को ठिकाने लगाओ। Bangsat. Jadi siapa dong pembunuhnya? Apakah mereka berbohong? Gue juga belum puas sih, meskipun polisi udah nahan si Rishabh sama si Rapi. Oke, lanjut. Dan tiba-tiba si Kia datang buat ngejenguk tunangannya, yaitu si Rishabh yang udah ditahan. Dan ternyata हमको वो ऋषभ है ना, उससे मिलवा दो, लेकिन हैव अ सेफ फ्लाइट। Thank you. Yeah? Just give me 5 minutes. Just sit here. ऋषभ और पूजा के अफेयर के बारे में कब पता चला? क्या? या मैं बस तुम बिना बताए इंडिया और तुम ये सहन नहीं कर पाए कि तुम टोरंटो से इंडिया आती हो, तुम्हारा मंगेतर फियांसे किया से नहीं। That's bullshit. Email. She was chasing him. She was. आपको पता है कि पीसीओ बूथ से कॉल किसने किया था? I don't think so, ma'am. No, I have to go. राज, इसको एक फोन करने दो, उसके बाद No! No, you can't do this. No! Please! If you remember the accident, please, you can't do this. Call my lawyer. akhirnya, oh my god, si Kia pembunuhnya, gengs. Loh, bagaimana bisa sih? उसकी ब्रेसलेट, Oke, उसकी ब्रेसलेट kalian lihat dengan seksama ya. बेडरूम में साइड टेबल पे पड़ा हुआ देखा था, जब किया कविता के कमरे में गई होगी। Yeah, speaking. ऋषभ के बारे में So you know. मेरा फियांसे है। Okay. So keep out. Please ऋषभ से बात करो, okay? Excuse me, the door.
Wow, ending yang membagongkan, gengs. Film ini memang gila sih. Ya, sebanding lah sama film The Risham. Oke, gengs. Nantikan review film atau alur cerita film dari gue selanjutnya. Yang penting kalau kalian udah nekan tombol subrek, pasti nggak akan ketinggalan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.